evening, friends. I think it's time that we started. We've got good participation today. I already got somebody in the chat box. Good. Can I ask somebody to just type something in the chat box so that we know that the chat box is operating for the attendees? Anything, just put a hi or something like that. Great, fantastic. So the chat box is working, and yeah. Okay, okay. Too many. Fine. This is what we want. आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, आज का जो प्रोग्राम है बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव प्रोग्राम रहेगा. सुमिता मैडम who is going to be our speaker for the day, आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, आपको बहुत कुछ सवाल पूछने वाले हैं, काफी इंटरैक्टिव रहने वाला है. तो हम चाहेंगे कि आप जितना चैट पे आप डाल सकेंगे उतना अच्छा रहेगा, whatever. So I think let us make this a completely interactive session. So again, let me start from the beginning. Good evening and a warm welcome from HMO, from Healthy Mind Online India Private Limited. Let me start with the introductions once again for the people who are not aware. So let me introduce myself. I am the director of Healthy Mind Online India, Amod Dixit, and my colleague over here, Geeta Dayal, she is from Healthy Mind Online from Singapore. और आज के हमारे होस्ट हैं और हमारे स्पीकर हैं सुमिता मैडम, सुमिता मंदिरत्ता. Let me speak a little bit about her. Just give me a moment. So this is Miss Sumita Mandiratta. She is a MA Psychology, PG Diploma in Guidance and Counseling, and Master of Philosophy. With more than 20 years of experience, she is now settled in Canada and doing the program from Canada. She's got a very vast experience. मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा. It's already on the screen. She is basically empaneled with the institutions and corporates like Kanchan Foundation, a registered NGO under the underprivileged section of society, and the Ashirwad Institute of Pain Management and Research. और जो उनके achievements हैं, so she is basically a movement facilitator for the Brain Gym, which Sumita, you can just speak on the Brain Gym, what it means for 1 minute before we start the program. She's a certified matrix re-imprinting practitioner, bouncer for me, so I think you can just tell me what it means as well. And certified emotional freedom technique practitioners. Of course, languages में Sumita can speak English, Hindi, and Punjabi very well. So people can ask questions in Hindi, English, or Punjabi. थोड़ा गुजराती मराठी होगा तो no problem, I will translate it, so not to worry. So with this, I think I'll hand over the mic straight away to Sumita. So Sumita, 2 lines about what I just said about your basic things. Namaskar. Good evening, everyone. Am I audible clearly? Absolutely. Okay, thank you. So thank you for the introduction, Amod. And today जो हम बात करने वाले हैं वो relationships है, जो topic है हमारा. और ये जो इन्होंने बोला मेरे बारे में for Brain Gym. So this is basically हम एक टेक्निक है जिससे कि हम राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करते हैं. As simple as that for a layman. और जो मैट्रिक्स रीइम्प्रिंटिंग या EFT है, ये भी सब एक टेक्निक्स हैं जस्ट कि हम स्ट्रेस फ्री रह सके. क्योंकि आज के ज़माने में ये बोलना कि हमें स्ट्रेस नहीं है, हम अपने आप से कहीं झूठ बोल रहे हैं या हम अपने आप को कोई धोखा दे रहे हैं कहना है. सो ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू जस्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड रिमेन स्ट्रेस फ्री. सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस टाइम. Just give me a moment. I'll be sharing my screen. So while Sumita is just sharing the screen, as I have said, please आप कुछ भी सवाल हो, कहीं पे भी कुछ भी पूछना हो या तो चैट पे डालिए, तो she can take it over from there. Okay, is my screen visible? Absolutely. Okay, thank you. So bringing magic into relationships आज हमारा टॉपिक है. तो जब आप ये वर्ड देख रहे हैं रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है आपके लिए? फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कुछ भी चलेगा.
बस लिखिए। ये वर्ड जैसे ही आपने सुना, जैसे ही आपने देखा, कोई चेहरा आपके सामने आया, किसी का नाम आया, क्या मतलब है आपके लिए रिलेशनशिप का? सो आई एम होपिंग जैसे आप लोगों ने जल्दी से हाय लिखी थी, वैसे ही इसका भी जवाब बहुत जल्दी से आने वाला है। नमोद, इफ यू कैन जस्ट प्लीज रीड इट टू मी, और गीता, बिकॉज आई विल नॉट एबल टू सी द चैट, but I Okay. can see few responses coming I've in. got a chat which says it means caring and loving each other. Okay. Somebody else has written connecting with people in the right manner. Yes. Waiting for a few more answers. Beautiful. बताइए रिलेशनशिप क्या है? Family, understanding वंडरफुल, each other. वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे A हैं कि person whom this is nice. A person whom you can count on. Emotional वाओ, attachment. Wow, I गुड, think we are getting fantastic response. यस। So you can see within few responses, we can understand the meaning of relationship word is different for everybody. And we are connecting different emotions with that, different people with that. हम अलग अलग लोगों के साथ उस रिलेशन को कनेक्ट करते हैं वर्ड को। तो यानी कि सच में जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं किसी के साथ भी, हम उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सो जस्ट लेट मी ब्रेक द वर्ड रिलेशनशिप। इसमें 3 वर्ड्स छुपे हुए हैं। वन इज द वर्ड रेला, ओके, जिसका मीनिंग है रियल। शन, TION, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक्शन के साथ। और शिप, शिप मीन्स एक वेसल जिसमें आप इमेजिन कीजिए आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वंस हैं। उस शिप में बहुत सारे लोग हैं, हमारे ऑफिस के भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे जितने हम लोगों को जानते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं उस शिप में कितने लोगों को बिठाना चाहती हूँ। ओके, सो एक्चुअली इट मीन्स इफ यू ब्रेक द वर्ड रिलेशनशिप, इट एक्चुअली मीन्स कितने लोगों के साथ हम ऑनेस्ट हैं, रियल, रियल एक्शन विद ऑल दोज पीपल। अब हम सच में क्या रियल एक्शन ले रहे हैं? क्या हम ऑनेस्ट और ऑथेंटिक हैं उन लोगों के साथ जब हम कोई भी रिलेशनशिप में जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑनेस्टी चाहिए किसी भी रिलेशन को निभाने में। ओके, सो एनी मोर रिस्पॉन्सेस कमिंग इन? Anything, any person, any word, anything coming in your mind, please keep writing in the chat box. Okay, okay, now let's understand ये जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, जिसको हमने रियल एक्शन बोला, वो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि वो एक्शन हम अपने साथ लें। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन, आई ऑलवेज लाइक इट। एक्सेप्टेंस इज हार्ड, वेदर इट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस और द एक्सेप्टेंस ऑफ गेटिंग ओवर। यानी कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को मानना, अपने आप को जानना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, आई वुड से। कई लोगों के लिए मुश्किल नहीं भी होता, बट चैलेंजिंग जरूर हो जाता है। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि अच्छा मुझे अपने आप को जानना पड़ेगा। फनी ना, हम तो अपने आप को जानते हैं, मुझे पता है मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, इससे ज्यादा जानने की क्या जरूरत है मुझे? तो आज हम देखते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड में कि हम अपने आप को और अच्छी तरह जान सकते हैं। ओके, कहीं भी आपको लगे कि आपको कोई डाउट है, आपको कोई सवाल है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, और अगर मैं फास्ट जा रही होंगी तो आप मुझे रोक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, राइट। अब तो मैं ये ये भी लोगों से बोलूंगा कि कुछ लोग Q&A में डाल रहे हैं अपना रिस्पॉन्स, तो मे बी अगर चैट में डालेंगे बेटर रहेगा। ओके, राइट। तो ये दिख रहा है आपको, इसका नाम है जोहारी विंडो। ना ये एक टेक्निक है जिससे कि हम अपने आप को, अपने बारे में, अपना रिलेशन और लोगों के साथ अपना रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम इसको समझ पाए। ये विंडो, ये खिड़की है जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे आपको 4 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, राइट, सिंपल वे में। तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट में हमको दिख रहा है ओपन अरीना। अब इसके 2 डायमेंशंस हैं, एक है नोन टू सेल्फ और एक है नोन टू अदर्स, राइट। तो कुछ चीजें हैं जो हम अपने बारे में करते हैं, कुछ चीजें हैं जो हम दूसरों के साथ भी शेयर कर लेते हैं,
दूसरों को बता देते हैं। जैसे इस टाइम आपको मेरे बारे में अगर पता चला है तो ये पता चला है कि मेरा नाम सुमिता मेहंदीरता है और मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, राइट? ये सबको पता चल गया है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, राइट? नेक्स्ट गो टू द हिडन एरिना। या तो हम नीचे जा सकते हैं या हम राइट जा सकते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन आई गो डाउन। सेकेंड थिंग इज नॉट नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता चली आज मेरे बारे में, पर मुझे पता है, राइट? सो वो हिडन एरिना है, वो मेरे सीक्रेट्स हो सकते हैं, वो चीजें हो सकती हैं जो मैं दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा उसको हिडन रखती हूँ, छुपा के रखती हूँ। इसको हम फसाड भी कहते हैं, इसको हम एक मास्क भी कह सकते हैं, जो हम कई बार जैसे बहुत दुखी होते हैं पर लोगों के सामने हम हंस रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है। जैसे इस टाइम यहाँ पे कुछ सुबह के 6:45 बजे हुए हैं, 6:45, और मैं कभी नहीं उठती हूँ इस टाइम पे, पर आज मैं उठी हुई हूँ, जो कि मैंने इसको ओपन एरिना कर दिया। अभी तक ये हिडन था, मे बी बहुत सारे लोगों के लिए, राइट? सो ऐसे कैसे हमने एक हिडन एरिना की चीज मैंने ओपन एरिया में डाल दी अपने बारे में। नेक्स्ट जाते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आप में से कितने लोग ड्राइविंग करते हैं? आई एम श्योर बहुत लोग करते होंगे। तो आपको पता है गाड़ी के साइड मिरर्स में हमें एक कई बार गाड़ी आती दिखती नहीं है, इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। सो नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। अभी ऐसी क्या चीज है मेरे बारे में कि मुझे नहीं पता बट आप लोगों को पता है? मे बी जिस तरह मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, बट कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है। कुछ लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि दिस वे इज नॉट गुड, या समथिंग अबाउट मी। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई गिव, जिसके साथ आप सब रिलेट करेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे कुछ लोग सोते हुए स्नोरिंग करते हैं, तो जो स्नोर कर रहा होता है उसको नहीं पता चलता, बट जो साथ वाला होता है उसको पता चलता है, राइट? सो दिस इज लाइक अ ब्लाइंड स्पॉट। यानी कि मैं इसके बारे में बहुत, मुझे नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ मेरे साथ, मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, बट सामने वाले को समझ आ रहा है। ये हमारे बिहेवियर्स, हमारे इमोशनल वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चीजें इस कैटेगरी में आ जाती हैं। अब जो फोर्थ कैटेगरी है वो है अननोन। अब ये तो बड़ी मुश्किल है, ना हमें पता है ना सामने वाले को पता है, तो हम करेंगे क्या इसके बारे में? ये होता है हमारा सबकॉन्शियस। ये तीन चीजें जो थी ये हमारे कॉन्शियस माइंड है। कहीं ना कहीं आपको पता है या मुझे पता है या मैं छुपा रही हूँ पर मुझे पता है, बट ये तो एरिया वो है जिसमें हम जाएंगे कैसे? ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे हम कॉन्शियसली नहीं जा सकते हैं। यस, थेरेपिस्ट की हेल्प से आप जरूर जा सकते हैं। बहुत जरूरी है उस सबकॉन्शियस माइंड को जानना, क्योंकि वहाँ हमारा जो 75 to 80% जो हमारा ब्रेन है, जैसे हम जब सोते हैं, जो हमें ड्रीम्स आते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और बहुत सारी चीजें जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं वो प्रोजेक्ट होती हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में। यानी कि हम सामने से बोल रहे होते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज को लेके हम बहुत परेशान होते हैं और हम कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, सो ये अगर कुछ आपको ऐसा लगा कि कहीं आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, हम क्वेश्चंस को अटेंड करने वाले हैं लास्ट में। ओके, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा अपने बारे में और जानते हैं, एक गेम खेलते हैं। चलिए 5 सेकंड दे रही हूं मैं, वापस से मुझे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। ये 5 शेप्स दिख रही हैं आपको, ओके? बॉक्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्विगल। फटाफट जल्दी से बताइए कि आपको कौन सी शेप अच्छी लग रही है। बस 5 सेकंड में, ज्यादा सोचना नहीं है। जो भी शेप आपको पहले में भाई है, आपको अच्छी लगी है, आप उसको लिख डालिए। Okay, I am getting a lot of answers. A lot of them are circles, a lot of them are triangles. As of now, these are the only 2 categories which have come in. Wonderful. Anybody else? Rectangle, okay. Great. Circle, triangle, rectangle.
What else? Majority की circles है. It. So there is not a single squiggle as of now. That's all I am trying to say. Wow. Yeah. Okay. Right. तो क्या करने वाले हैं हम इस गेम के थ्रू? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जा रही हूँ आपको, और आपको और थोड़ा समझ आएगा कि हमने ये गेम क्यों खेली. अगर आपके अभी भी रिस्पॉन्सेज हैं तो आप लिख सकते हैं. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. इट जस्ट कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं. ओके, एज सिंपल एज दैट. तो हम सबका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है. एक जन ने हाथ उठाया है. वुड यू लाइक टू से? या मैं आपका, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक. प्लीज गो अहेड. मिस्टर अनंत. आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ, बोलिए. कुछ कहना चाहते हैं आप? I am not able to hear anybody. हम लोग कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. चलिए, कोई बात नहीं, आप चैट विंडो में डाल दीजिएगा आपको जो बोलना है. यस, डेफिनेटली. सो हमें सबको पता है कि हमारा एक लेफ्ट ब्रेन है और एक हमारा राइट ब्रेन है. ओके, सो अभी इस स्लाइड से आपको ये समझ आ गया कि अगर आपने सर्कल किया है तो आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल, बहुत क्रिएटिव हैं. जरूरी नहीं क्रिएटिव मतलब आपको एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट होना पड़ेगा. क्रिएटिविटी इन जो भी आप कर रहे हैं, राइट. और बहुत रिसेप्टिव हैं. रिसेप्टिव मीन्स आप कहीं ना कहीं चीजों को बहुत कनेक्ट करते हैं. ओके, और सेम विद द स्क्विगल ऑल्सो. दो आप अमोद ने बताया कि कोई स्क्विगल शेप नहीं है, बट स्टिल. एंड जो बॉक्स है, जो ट्रायंगल है या जो रेक्टेंगल है, ये तीनों शेप्स कहीं ना कहीं जो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट लोग हैं, और इनको डिटेलिंग बहुत पसंद है, बहुत लॉजिकल और बहुत सीक्वेंस में बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं ये लोग. तो अगर आप जिन्होंने सर्कल सिलेक्ट किया है या जिन्होंने बॉक्स सिलेक्ट किया है, ट्रायंगल किया है, उनमें से कोई अनम्यूट करना चाहेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बारे में कुछ और डिटेल्स हम डिस्कस करें, सो यू नो आई अलाउ यू टू जस्ट अनम्यूट और जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. सो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसे एक शेप से कनेक्ट हो सकती है. एज सिंपल एज दैट. एनीबडी वुड लाइक टू take this game further? Anybody from the panelist or anybody from the participants? कोई भी अगर चाहता है कि हम कुछ और डिटेल्स करें, so we can just go ahead. तो अगर कोई अटेंडी अगर चाह रहा है कुछ बोलना, तो आपको ये बटन है नीचे, रेज हैंड. तो आप रेज हैंड अगर करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. कोई घबराने की बात नहीं है. मैं ऐसा कोई सीक्रेट नहीं बताने वाली हूँ आपकी. नहीं, आपकी कोई सीक्रेट बाहर आने वाली है. इट इज जस्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैसे एक शेप से हमारी पर्सनालिटी कनेक्ट हो सकती है. एज सिंपल एज दैट. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ साइकोज्योमेट्रिक्स. मैंने नीचे सोर्स लिखा है. सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल एंड पिक दैट इंफॉर्मेशन. सुमिता, ये एक क्वेश्चन है. प्लीज टेल अबाउट ट्रायंगल चोजन पर्सन. Triangle. Okay, so you can unmute and then I can ask you some questions and then you can say that आपके साथ वो connect करता है कि नहीं. Anybody who is triangle is a very high energy person. क्या आप एक बहुत high energy charged person है? हमेशा एक ये कर सकते हैं ऐसा attitude है आपका? Yes, no आप chat box में लिख सकते हैं. जितने भी triangles हैं उन सब के लिए है ये. कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हैं. आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है. बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप. लीडरशिप क्वालिटीज हैं आपके अंदर. चाहे वो घर के अंदर भी हो सकती है, जरूरी नहीं ऑफिस में हो, बट समवेयर यू आर वेरी एम्बिशियस और आपको एक गोल पे पहुंचने की, एक टॉप पे पहुंचने की बहुत चाहत है. यस, नो, एनी आंसर्स? यस कह रहे हैं. वंडरफुल, थैंक यू. और जो चीज आपको पसंद नहीं आती है वो है कि थोड़ा सा इम्पेशेंट है हम. हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस कम है. हमें चीजें बहुत झटपट फटाफट चाहिए. तो
कहीं ना कहीं हम बहुत कभी कभी डिसीजंस में भी इम्पल्सिव हो जाते हैं, यू नो नहीं कर पाते। वो वेटिंग पीरियड जो आता है ना, वो हमें बड़ा मुश्किल करता है, और जब हम लोगों को काम ना करता देखते हैं तो हमें और भी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। ये सब चीजें मैं इन जनरल बता रही हूँ, कुछ चीजें आपके साथ स्पेसिफिकली हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी। वो आप Exactly. exactly कह रहे हैं। Exactly. थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू प्ले अराउंड? इट्स जस्ट अ गेम। तो ये जानिए कि हम अपनी Somebody शेप। else has said absolutely correct. वंडरफुल, यस। किसी और ने भी रेज हैंड किया है? कोई और क्वेश्चन, कोई और शेप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। Yeah, so the host will allow the person to speak. Is that possible, admin? Isn't it interesting कि एक छोटी सी शेप से हम कैसे पहचान सकते हैं अपनी इतनी पर्सनालिटी के बारे में? Yeah. Someone is please. saying they want to know about circle, Sumita. Maybe you can tell about circle. Yeah, I think Great. आपको somebody मिस्टर has been दरानी आपको unmuted. अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, तब ये आप कर बात दिया, करिए। unmute तो कर दिया. Can you just please say something, whatever you wanted to say? Hi, this is Surendran. Hi. I just want to know more about Circle. Okay, great. So circles are real, genuinely caring people. मतलब आपको you are a people's person. Everybody likes you, everybody around you, people connected with you. You're very friendly. Is that so? Yes, agree. Great. You're very sensitive, you're very empathetic. आप बहुत एक लोग आपके पास आके अपनी कहानियां सुनाते हैं, बहुत मतलब आप बहुत पेशेंटली उनकी बातें सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना। Yeah. Great. Now sometimes, and you don't like conflict in your life. कभी भी if you get into a situation where you have to say no to someone, or you really hate conflict kind of a thing, you don't want yourself to get into that position जहाँ पे if you have to say no, you try to please everyone. Yeah, I try for it. Yes. Great. So these are small glimpses about the circle personality. Oh, perfect. Perfect. Sundar. Great. Thank you. Thank you. So वो जो circles हैं, आपको पता चल गया। अब आपके आप ही की फैमिली में, आप ही के घरों में, आपके फ्रेंड सर्कल में डिफरेंट शेप्स के लोग होंगे। सो इमेजिन कीजिए एक सर्कल और एक ट्रायंगल का एक कॉन्वर्सेशन में एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ। मैं एक सर्कल हूँ, तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगी लोगों से? हेलो, हाउ आर यू, वेरी वार्मली, क्योंकि मैं लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ। और जो ट्रायंगल है, मेरे सामने मान लीजिए मेरे बॉस हैं या मेरे हस्बैंड हैं, वो ट्रायंगल हैं। सो ही इज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू कट बात करना है, कोई फालतू का नहीं। तो मैं बहुत वार्मली जा रही हूँ, और वो कैसे कनेक्ट करेंगे मेरे से? इन अ लीडरशिप रोल। तो चाहे वो मेरे फ्रेंड भी हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड हो सकते हैं, मेरी पार्टनर हो सकता है, मेरा बच्चा हो सकता है। सो द इंटरैक्शन चेंजेस। आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहते हैं। ही इज वेरी डायरेक्टिव, मतलब कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, और मैं तो लोगों को खुश करने के चक्कर में मतलब मैं किसी भी एक्सटेंट पे चली जाऊंगी। यू अंडरस्टैंड हाउ रिलेशनशिप्स। अब ये शेप से हमारा रिलेशनशिप कैसे कनेक्ट होगा? क्योंकि जिस तरह हम कम्युनिकेट करेंगे, जिस तरह हम कनेक्ट करेंगे, वही हमारे रिलेशनशिप का एक बेस बन जाता है। तो आप समझेंगे इसके थ्रू कि कैसे डिफरेंट शेप के लोग जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ना जानते हुए कि, और हम बोलते हैं पता नहीं ये रिलेशन हमारा चल क्यों नहीं रहा है, पता नहीं ये मेरा हस्बैंड मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, पता नहीं ये मेरा बच्चा मेरे साथ इतना गुस्से में क्यों रहता है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ उसके लिए। So just giving you a little glimpse. I hope everybody is enjoying and having fun. It's just to have fun. Can we go further? Or anybody would like to know anything else? Yeah, please. Okay, the next part. हमने करी shapes की बात, अब हम कर रहे हैं colors की बात।
So anybody, any thing coming in your mind जब हम colors की बात करते हैं, do you believe कि color choices से हमारे emotions affect हो सकते हैं? या कभी आपने ऐसा सोचा कि आज मान लीजिए मैंने ये रंग पहना है, for as simple as that, जो भी जिसने जो कलर पहना हुआ है उससे कुछ एक इमोशनल कनेक्शन था इसलिए मैंने आज ये रंग चूज किया, या as simple as that कि मुझे ये रंग पसंद है, हमेशा मैं यही रंग के सामान लेती हूँ, ये रंग से मुझे कनेक्शन है। ऐसा क्यों है कि हम एक ही रंग से कनेक्ट करते हैं? कई बार कई लोग डिफरेंट कलर्स में भी जाते हैं। सो जस्ट टू हैव अ स्मॉल like a 15 to 20 seconds, हम जस्ट इमेजिन करेंगे हम एक डार्क रूम में बैठे हैं। सो प्लीज क्लोज योर आईज and just Yeah. imagine yourself. Is anybody trying to say something? Okay. No, I think there was some background noise. We muted him. Okay. So just imagine yourself कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल पिच डार्क रूम है, and just start with your breathing. Breathe in and breathe out. Very simple, slow, deep breathing. Now what's happening is, as you are doing breathing and as your eyes are closed, any colors coming up for you, as simple as that, just 5 seconds, 10 seconds, जितना भी आप आंखें बंद करना चाहते हैं, keep doing your breathing and just see any colors coming up, any emotions coming up with those colors, and you can just write in the chat box. Okay, so I'm getting blue, green, white, red, nature. Okay, Now beautiful. we'll have to figure out nature मतलब कौन सा color. So if you can be specific for the colors. The green. The green, wonderful. Yeah. So the blues and the greens. Blue, green, white, red. Red. Okay, So far. great. Okay, I think more. Okay, okay. Somebody's got a mixture of white, yellow, and black. Okay, great. So I'm going to show you some colors, quickly, and I'm just going to run through it, and you will just say that while seeing that color, what anything you connected to, like any emotion coming up, any feeling coming up. ऐसा कुछ देख के उसको ऐसा लगता है इस कलर से, अरे ये तो you connect somebody with that color. ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कलर मेरे बच्चे का है, ये कलर मेरे हस्बैंड का है. So I'm just going to run through the slides. The blue, the deep blue. You want us to write? The greens. You can write also in the Yeah. chat box. You can express yourself. Absolutely. When you are seeing this color, what's coming up for you, any emotion, any feeling. The orangish red. We call it the orangish red. And the yellow. Okay. Anybody wants me to run through the colors again? Or is that fine? You saw the colors. Okay. Can I tell you the answers which we've got? Yes, Okay. definitely. The blue we've got sea, sky. The green we've got grass. The red we've got a traffic signal. Yes. The orange we've got energy. Now there is Beautiful. one answer which is saying dangerous. Which color I do not know, but look, hope I'm thinking it is like red. Then I'm looking Okay. at for the yellow I've got a lemon, limbu, Yeah. and then again I've got a sky. So these are the various answers which we've got. And- Hold on, and okay. So Earlier, someone had said that colors is equal to feelings. There is one Wonderful. Wonderful. response So, there as well. so that person has understood what I'm trying to say for sure. तो बेसिकली जो मैं करना चाह रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि कलर्स हमारे इमोशन से कनेक्टेड है. कलर्स हमारी मदर टंग है, सबकॉन्शियस. रिमेम्बर वो ज्वारी विंडो में जो अननोन था. Sumita, I'm just, this is such a lovely response. I want to read it. Yes. When I see Please. yellow, my face smiles automatically. I feel happy. Beautiful. So beautiful.
सो आप देख रहे हैं कि कैसे हम कलर्स को डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट हमारे जो आसपास की एनवायरनमेंट है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलर्स हमारा इंटीग्रल पार्ट है हमारे जीवन का, राइट? सो अब हम ये समझते हैं कि जितने भी ब्लूज थे, जो लोग ब्लूज हैं, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, और अगर आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक दैट, आपके सामने एक ब्लू के लिए मैं एक पिक्चर दे रही हूँ, एक मॉम एंड बेबी। एक माँ और बच्चे का क्या प्यार होता है, कितना बिलोंग्ड, कितना कंटेंटेड, कितना पीसफुल, दैट कामनेस, दैट कनेक्शन, दैट्स द ब्लू पीपल, दैट्स द ब्लू कलर। सो जितने भी ब्लू लोग हैं यहाँ पे, वो बहुत सोच सकते हैं अपने आप को, और अगर उनको लग रहा है कि यस दिस वर्ड्स कनेक्ट विद देम, यू कैन राइट यस इन द चैट बॉक्स, कि आपके लिए कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं। लोगों से कनेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट करना, अपने लव्ड वन से कनेक्ट करना, फीलिंग बिलोंग्ड। और जहां आपको लगता है कि आप नहीं फील बिलोंग कर पा रहे या नहीं वो कनेक्शन मिल रहा, वहीं आप परेशान हो जाते हैं। Anybody with blue people? Yes, no? Lots of them. Okay. So any response coming that are they able to relate to this? So Okay. किसी को तो शादी याद आ गई after. So we went It's a for a connection. photo shoot in a blue. Wow. Yeah. When I see yellow color, I remember my engagement. See, so many beautiful connections our brain makes in just milliseconds. Okay. Very The true. greens. Yeah. Now the greens is like, I'm going to put the picture of a mountain in front of you. Just imagine the mountain, that structure. So for all the greens in the room, the self-esteem, the self-respect is really, really important. मेरा मान और अभिमान हिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। मेरी इज्जत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कुछ उनके वर्ड्स ऐसे होते हैं इन द माइंड, या वो बोलते जब हैं, वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट आई एम एबल टू दैट स्ट्रक्चर। उनके लिए वो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ कभी झुकता नहीं है, पहाड़ खड़ा रहता है, पहाड़ वही रहता है। So I'm connecting it to the nature. Yeah, but does it also touch the ego somewhere? Maybe. Because somewhere self-esteem, self-esteem and ego are two different things, but I'm sure that there must be some connection. Some connection, because कहीं ना कहीं जब वो so I'm giving you a very broad category of primary colors. Okay, so somewhere there are different shades. We are not actually going into that, but just to get you a simple explanation about how we can connect with that way. But कहीं ना कहीं जब वो self-esteem बहुत ऊपर चला जाता है, that balance is lost. So somewhere we come into that zone also. And so, before I go further, anybody wants to say something? There is a response regarding green. I expect the world to be like this color. Beautiful. Beautiful. So for that person, I would just like to say, you like to, get people to respond in a particular manner, like the typical green. In terms of, that is how, like he said, he or she, I don't know, but they said that, this is the way I want people to respond. Is it really possible? Because this is what I want, but what's happening? And if this person is not getting the way he or she wants, it's really difficult. It's really stressful. So now we understand how we are, so much connected. Before I go further, the blue water is, the bluest color is basically connected more to the water also. Like it's flowing, it's always flowing. The blue people are always loving, feeling belonged, feeling contented. They really want to connect, but sometimes it's over the board. And for other people, and for yourself also. क्योंकि कभी-कभी जब आपको वो फीलिंग नहीं मिलती ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। वो वाला कनेक्शन नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं।
Okay, so can we go further to the red? Yes. Okay, so the reds. So our orangish red, I would say. I'm not going to the proper red. It's the, I would say, the HMO orangish red. Somewhere there's a lot of activity, as we can see, HMO is doing so much action today, and always. It's also about self-confidence. That confidence that yes, I can do it. हमेशा एक चार्ज्ड अप रहना, हमेशा एक एक्शन की तरफ रहना, एक जैसे एक फरारी कार होती है, एक कार, वो उस कार को देखते ही आपका एक, जैसे ही वो देखेंगे आप, एक bright orangish red color, so just that action comes in your mind. So that is the orangish red color, I would say, which is connected with बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा एक्टिविटी. और जब ये एक्शन हमारी लाइफ में नहीं होता है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वही एक्शन चाहिए सामने वाले से. अभी मैं तो उतनी एक्टिव हूँ, पर अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो वो एक्शन कनेक्ट हो जाता है कभी कभी एग्रेशन में. ओके, सो लॉट ऑफ टाइम्स कई लोगों ने रेड कलर को सिग्नल पे भी कनेक्ट किया, दैट स्टॉप, बिकॉज वो स्टक हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू मूव फर्दर. ओके, एंड द लास्ट, द येलो, जिसको कई लोगों ने कहा था बहुत खुशी है. सो वेरी सिंपल इज द सन, द ब्राइट येलो सन, व्हेन द सनलाइट, how we connected to beautiful happiness, there is hope, there is an inner freedom. It's like a bird flying in the sky. खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ मैं हमेशा. अगर मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ, अगर मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ किसी से भी, पर सेम टाइम पे मैं कनेक्ट भी होना चाहती हूँ. सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ थॉट टू, क्या ये पॉसिबल है कि आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया वो कनेक्ट हो सकती है, या वो आती है, थोड़ी देर बैठती है और फिर उड़ जाती है. सो ऑल द येलो पीपल, somewhere there's a deep down expectation of the future, and lot of feelings to just be free from emotionals, free from whatever you are doing. So you can just think about it, write in the chat box. Before we go further, anything you did not understand, any questions, please keep writing in the chat box and we are going to attend to all of them. अभी जिन पिक्चर्स की मैं बात कर रही थी वो पिक्चर्स आपके सामने हैं. द ब्लू, द मदर एंड द बेबी, एक्सट्रीम connection. The green, the mountain. Number 2, the red. So the red is like an action, that person is into action. All the sports people are the red people, the action people. They have to be in constant action to keep themselves into an activity zone. And the free bird, the yellow. Now what I've added in this slide is 4 new words for you. So it's a little more perspective. थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा. अगर आपको लगे कि ये कंफ्यूजिंग है तो यू कैन ऑलवेज आस्क. आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल पर्सपेक्टिव. सो कोई मेरे साथ एक छोटी सी गेम खेलना चाहेगा, सो दे कैन जस्ट raise their hand and I'm just going to ask them the questions connected with this. Before we do that, let me read out a couple more responses. Yes, please. Red is my favorite color. Whatever I choose, a bit of this color. Whatever I choose, a bit of this color exists. And उसके Okay. साथ ही एक शब्द है anger. उसके बाद yellow, I feel bright. Bright, I Yes, feel. wonderful, great. So हम ये डायमेंशंस की बात करने वाले हैं कि कलर्स के साथ कैसे कनेक्टेड हैं ये डायमेंशंस जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं. रिसेप्टिव, डायरेक्टिव, variable, constant, all these are dimensions. So just 3 questions and you will know more about yourself. So anybody would like to be my guest, and or anybody would like to just understand? Somebody has raised hand. Yeah.
Yeah, I am allowed to talk. Please unmute yourself and you can talk. I have Karthik, you wanted to say something. Please unmute yourself and talk. Okay, I think you yeah, now. Karthik, वो पकड़ के मैं yeah, Karthik. yes Hello. yes Yeah. So hi hi. good evening. Good evening. So what's the color you have got into, like in any of your favorites, the blue, the green, the red, the yellow, out of the 4 primary? I got white, green and black. Okay, great. So we are connecting with the green here because I'm not going in any other further color. Okay, so if we just go with the greens, what you have connected with, it's always or sometimes. Do you feel that any emotion connected with the green color for you? I feel light. You feel light. Yes. So is it always or is it sometimes? Always when I see even the grass which are available Okay. near to my feet, okay, Okay. immediately my feeling get diverted. Right. So do you feel this feeling in one part of your body or in your whole body? Like in one part of your, like in specific? Maybe my eyes and heart. Right. So it's specific to a part, right? Yes. And it's always there. And when you see this color, or when you feel in your eyes this color, when you feel in your feet this color, do you feel directive or receptive? Directive means you are, you want to give something, or do you feel like receiving something? It may be directive. Directive. Wonderful. So it's constant and directive. You can Yes. read these 2 words on the slide. Yes, I could. Okay. Now going little further, are you a person who would always like things in a particular manner, and you would always like to, you like to give instructions, you like people to follow them in a particular manner? You are that kind of a person, and there's no right and wrong. We are just discussing. No, when the person needs something, suggestion or kind of information from me, I do that. Right. So you will always unless they need, I voluntarily I will not give. But sometimes, if it is required for the society or it is required for the particular situation, definitely I'll do that. Yes. So for you, the self-respect and self-esteem is really important. Like you would always like, yes, whatever I do, it has to be connected to, like something, anything, kahin mera, my self-esteem should not be affected with this. You will always keep that in mind. Sorry, come again. You will always keep that in mind, that your self-esteem and self-respect has to be there in anything you do in life. Okay. Yeah. Right. Sure, I take this one. Okay, great. Thank you so much. Thank you for coming forward and, giving such an active participation. Thank you so much. So what is the result about it? Yeah, so these are the words we were discussing, that for you, like these 2 words were there. You said it's always there. You said it's directive. You want to give to people. And at the same time, that's the aspect I was telling you. Okay. And it's about the green color, like we talked about the self-esteem and self-respect. Fine. Yo, thank you so much. Okay, so these are just different aspects of our personality. This is how we are. There is nothing right and wrong. And this is a pattern which our brain accepts, because we are doing this and we want to keep repeating this. And what's beautiful is we want other people also to keep doing this. We want people to respond to us in a particular manner. हम चाहते हैं कि लोग ऐसे ही करें हमारे साथ, तो ही हमें अच्छा लगेगा. So ये एक अटेम्प्ट है आप लोगों को सबको बताने के लिए कि जब हम रिलेशनशिप्स बना रहे होते हैं, तो हम तो इस तरह चल रहे हैं, हम तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम तो अपने दिमाग में ये सब
सेक्शंस लेके बैठे हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, पर सामने वाले को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे वो हमारा बॉस हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो। तो हम अपने बारे में इतना कुछ कर रहे हैं, अपने बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सामने वाला क्या चाह रहा है, राइट? ओके, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप्स में। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि अभी तक तो हम कलर और शेप की बात कर रहे थे, रिलेशन की तो बात करी नहीं हमने। बट सच में हम रिलेशन की बात नहीं करी, या हमें कुछ समझ आया थ्रू जोहारी विंडो, थ्रू कलर्स, थ्रू शेप्स, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस हैं, रिलेशनशिप होता क्या है, किसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए, क्या सच में रिलेशनशिप जरूरी है, हम अकेले खुश नहीं रहते हैं, ज्यादा अच्छा होता ना कि हम अकेले ही रहते, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड रिलेशनशिप्स। सो ये सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हैं, और ये सब के आंसर्स आई एम श्योर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बट दीज आर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो हम बातें कर रहे थे अभी तक, वो हमें इन चीजों से कनेक्ट कर रहा है। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू डिड नॉट एक आंसर आया है, रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस, ब्यूटीफुल, No, but beautiful. when it becomes interactive, I think people, when they interact, it becomes really nice, because then we Yes. come to know what is going on in our own minds and how we are clearing the clouds. Absolutely, and it's so much beautiful because we come forward and share. I would say sharing is the best way of getting information and giving information. Beautiful. So guys, anybody else who want to share the relationship में क्या हो रहा है? On the previous slide that Sumita just showed. Sumita, just go back to the previous slide. Yes. Okay. So who would you like to have a relationship with? अब boyfriend girlfriend मत बोलना, there are more. Or who would not like to have a relationship with? Yes, that's also very important. Whom you don't like to have a relationship with. And no, सुमिता, but आज की तारीख में जो मुझे समझ में आ रहा है, आज की तारीख में भाई भाई के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता. Yes. It is not about the husband and wife. It is about a parent and child also. Yes. आज सवेरे के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं पढ़ रहा था, a father has sued his 18-year-old daughter. So something is wrong somewhere, Definitely. नजदीक वाले रिलेशनशिप भी दूर होते जा रहे हैं. What are the features of a good relationship? Guys, please write. Why are healthy relationships so important? जो दिमाग में आता है, please लिखिए. Now I have explained it. You can go further. Let people write. Yes. Beautiful. Okay. So relationship को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. मनी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कभी कभी रिलेशनशिप से भी ज्यादा हो जाता है मनी. पर हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. आज तक आपने लाइफ इंश्योरेंस सुना है, पॉलिसीज हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, पर आपने कभी रिलेशनशिप एडवाइजर का नाम सुना? कभी किसी से सुना कि आप रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आया हूँ? कभी किसी ऐसे ऐसे पर्सन से आप मिले जो आपको ये समझाए कि रिलेशनशिप में कैसे इन्वेस्ट करना है? सो कहीं ना कहीं हम ये इन्वेस्टमेंट या तो करना चाह नहीं रहे हैं, या फिर करने से डर रहे हैं, या अगर कर दिया है तो उससे परेशान है कि हमने क्यों कर दिया इसमें इन्वेस्ट, कुछ मिला तो है नहीं. क्योंकि जहां हम वर्ड इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है. इन्वेस्टमेंट मतलब वापस कुछ मिलेगा ना, राइट? क्योंकि अगर हमने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसका कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए. सो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें कि हम रिटर्न चाह ही रहे हैं. ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जिसमें हमें रिटर्न नहीं चाहिए. सो जस्ट विद माय अंडरस्टैंडिंग मैंने ये 3 C's डेवलप किए हैं. अगर आप कोई और वर्ड ऐड करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम. So I'll just tell you, Sumita, one answer, beautiful answer. Relationship is faith. Faith. Beautiful. Okay.
it brings sadness if close relationships break. Absolutely. Frequency balance between both and many. Okay, Yes. then So now true. somebody has added a color to the means added a color which is related to the previous slide, yellowish green. Okay, now that's a different color that Yes. has come up. Yes. So one answer is understanding other person and also their character and emotions so that you can adjust yourself and make the Absolutely. relationship stronger and more beautiful. Okay. So the person who has written yellowish green, I would like to ask that is justice. Justice means ऐसा ही ये न्याय है, ये नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है. Are you always looking into that aspect? The yellow and the green. For you, justice is really important. Yes, no? You can just write. जो भी आप एक्शन करते हैं वो हमेशा आप इस तरह से सोचते हैं कि ये ठीक है या गलत है. So the person who said yellowish green has answered your thing. It is yes. The answer is yes. Okay, great. The person thinks likewise. Yes, beautiful. Yeah. So these are all more different aspects. I'm not going into so much details because I have a time boundary. I'm so sorry that I cannot go into more details about colors. But then definitely your questions, I'm going to answer all. Okay. Sure. So let's understand what are the 3 C's which we do in a relationship as an investment, and that is what we are looking for. So you can take it as understanding, you can take it as a information. कम्युनिकेशन, कोई भी रिलेशनशिप हमको बनाना है या करना है, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा. साइलेंस में रिलेशन कैसे चलेगा? पर चल रहे हैं. बहुत दुनिया है जो रिलेशनशिप साइलेंस में चला रही है. बट देन कम्युनिकेट करिए. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप. जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, एज सिंपल एज आज ये जो हमने एक वर्कशॉप में रिलेशनशिप बनाया है वो भी कम्युनिकेशन पे ही चल रहा है, you know, because you all communicated so beautifully, you all expressed so beautifully. That is why I could share so much, and thank you for all that. So commitment, एक कमिटमेंट है इस टाइम हम सब की कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब अपना 100% दे रहे हैं, चाहे वो HMO people हैं, चाहे वो participants हैं. We all are committed for this cause. So कहीं ना कहीं from your heart, from your full action, you're doing that commitment. आपको ये किसी ने वर्ड यूज किया था रिलेशनशिप के लिए, फेथ, एक ट्रस्ट है. तभी आप लोग हम ओपन होते हैं टू शेयर, बिकॉज यू फील सेफ. तो जब आपको वो लगता है कि इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, फेथ है, आई फील सेफ, I can commit, I can communicate. And the third thing is collaboration. कोई भी रिलेशनशिप बिना कोलैबोरेशन के चलना बहुत मुश्किल है. कोलैबोरेशन मीन्स टीम वर्क, 2 लोगों का टीम वर्क. और अगर मैं अपने आप से रिलेशन रखना चाह रही हूँ तो मुझे अपने आप के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, अपने आप के साथ वो कमिटमेंट रखनी पड़ेगी, अपने आप के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. सो रिलेशनशिप चाहे मैं अपने आप के साथ रखूं, चाहे मैं लोगों के साथ रखूं, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है. अगर आपको कोई और वर्ड ऐड करना है, कोई एनी वर्ड विच इज कमिंग टू यू इस टाइम पे आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, सो प्लीज फील फ्री टू ऐड दिस. Someone has said relationship is trust. Someone has added the word truthful. Yes. So like we were talking, trust, faith, feel safe. These are all different aspects of how we commit ourselves, how we communicate, how we collaborate. Okay, so going further, let's do a quick recap of जो हम इतना interactive session कर रहे थे. So just a quick recap for all of us. What are the reflections today? And this is also pointing to the Q&A, that
Did I really understand about myself? या कुछ तो समझा, 1%, 5%, 10%, कुछ एस्पेक्ट पता चला with a choice of shape, with a choice of color. कहीं ना कहीं हमने उसको कनेक्ट किया with my emotions. Okay? और एक वर्ड या एक सेंटेंस जो आज आप यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, जो भी वर्ड आपके दिमाग में है, या कोई एक सेंटेंस कि I am this या I am doing this, anything in the present I would say. ऐसा वो should और would मत लगाइए प्लीज, क्योंकि जैसे हम shoulds लगाते हैं और I will do this, हम अपने ब्रेन को बहुत स्ट्रेस कर देते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी वो एक्सपेक्टेशन लगा दी है. ओके, सो सेम टाइम पे एक सेंटेंस या एक वर्ड, एक सेंटेंस जो कि मैं प्रेजेंट में कहना चाहूंगी कि आई एम डूइंग दिस या आई एम लाइक दिस, यू नो, समथिंग, any word which is coming. Somebody has raised hand, I think. Would you like to share something? Yeah. Karthik, can you unmute and talk? Okay, I think it's by mistake. Okay. Okay, so I'm getting some replies. Let me just start Yes. with that. Relationship is give and take, cannot be one way. Somebody has said self-awareness. Somebody has said self-realization. Beautiful. Then somebody has said, if I am a circle, I need to understand and might the other. Okay, let me read it again. If I am a Yeah. circle, I need to understand that the other might be a triangle. Absolutely, bang on. Yeah. We don't know. Maybe the person is circle, and that's why, you know, people whom you connect to really, because that person is really connected to you, हमें लगता है बहुत अच्छा relation है, because maybe you both have the same shape, you know, you both have the same kind of a personality in terms of that aspect. Beautiful. So कहीं ना कहीं कुछ So fit हो रहा है. self-respect, colors give feelings. Yes. So these are the two more things that have come up. Beautiful. So एक word, एक sentence जो आप अगर चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं कि यहाँ से आज आप कौन सा एक वर्ड, क्योंकि वो वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है और वो वर्ड आपको एक और नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए जरूरी होगा, बिकॉज दैट इज समथिंग यू विल ऑलवेज, यू नो, कनेक्ट विद, और वो आपको याद दिलाएगा कि दिस इज समथिंग मे बी आई नीड टू डू, मे बी आई एम डूइंग इट, और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है. Okay, there's a query over here for you, Sumita. Yes. How do I find out the shape of the other? Okay, how do you find out? So you have to go into psychogeometrics, I would say. मतलब मुझे आज अगर आपसे रिश्ता रखना है तो आपका शेप समझ में नहीं आएगा तो मैं एडजस्ट कैसे करूंगा? बिल्कुल. तो अब हमें इतना समझ आ गया कि डिफरेंट पर्सनालिटीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं शेप और कलर से होता है. सो दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, आई वुड से, फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो बहुत जरूरी है कि पहले आप अभी अपने आप को समझ लीजिए, एंड धीरे धीरे जितना आप अपने आप को समझते जाएंगे आपको इतना अवेयरनेस आ जाएगा कि हाँ, सामने वाला अगर ऐसा कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, यू नो, वो भी समझना बहुत जरूरी है. वो एक दूसरे को एक्नॉलेज करना कि अच्छा ये आदमी डिफरेंट है, क्योंकि हमें लगता है हमें ये चाहिए तो सामने वाले को भी ये करना चाहिए. अक्सर हमारी ये सोच नहीं होती है कि क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए इसलिए मेरे बच्चे को ऐसे इस टाइम मुझे यही बोलना चाहिए, और इसी में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. तो अगर आप इतना समझ पाए हैं कि मे बी सामने वाला दूसरा हो सकता है, मे बी यू नो दैट पर्सन कैन बी ए डिफरेंट, बिकॉज उसका ब्रेन और मेरा ब्रेन अलग अलग है, तो उसका कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है, तो आप एटलीस्ट अपना पर्सपेक्टिव तो चेंज करेंगे उसके लिए. आई वुड से दैट इज अ बिग स्टेप. Couple of things. One person has said helping. One person has said I missed the SAFE session. So if you could share some info by email later, it would be helpful. So Sure. if the admin can just note down this email ID, we can send across the details. Definitely. Yeah. We Thank can you. do that. Thank you so much for sharing. And Sure, a will quick do. game coming again. Yeah.
Anybody wanted to say something before I go ahead? No, just said that HMO admin has said yes, they will make sure the email is sent. Right. Okay, I'm going to show you a picture and then you can write in the chat box after viewing the picture कि आपको क्या दिख रहा है. So this picture is there for the next 10 seconds. Okay. So you can now write in the chat box, what did you see? Anybody wants to see the picture more? Or they, that's okay. I think I counted 10 seconds in my mind. So I am Or I getting keep some the picture. answers, Sumita. Yes. Lion, it's Einstein, it's leaves, it is an old person, many leaves and face of a person, two people. Yes. I'm waiting for a few more and then you can take over. Okay, so that there's one answer which is saying two people and the other answer which is similar, which is saying two young people. Wow. Yeah, no, I think somebody said old, somebody is specifying young. Okay, great. Okay. तो एक ही पिक्चर में हमें बहुत कुछ दिख रहा है, right? Again, मतलब different शेर से perspective. लेकर पत्ते से लेकर इंसान से लेकर सब आ गया. सब आ Einstein. गया. आइंस्टाइन भी आ गया. Yes. और किसी को कुछ दिख रहा है? तो please write. So, in the again, chat box. somebody has seen two people, somebody else. ओके सो जिन्होंने यंग पीपल देखा है उनको ये यंग पीपल कर क्या रहे हैं वो कुछ दिख रहा है? Somebody said two young people. Can you see in the eyes part what the young people are doing? I'm waiting for some answers, then I'll come. Okay. Yes. First of all, I didn't visualize the young people, but people who are saying to them, seeing the young people as are seeing them kissing. Yes. Somebody has written that? Yeah. One Good. more answer has come, mother and a baby. Wow. Yes, there is a picture which is also showing two perspectives. One is of an old man because we just see the whole face, and then another is two young people kissing each other. We don't know actually they're young or old. That's just a perspective. Even old people can kiss. Yeah, You yeah, know? why not? So I would say that's our perspective, what we have always connected with. तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो ये सिर्फ हमारा देखने का नजरिया है. Right. On this note, I would say, you know, हमारा देखने का नजरिया होता है और जब हम वो नजरिया चेंज कर लेते हैं तो नजारे बदल जाते हैं. क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं अपने रिश्तों को, जिस तरह से हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, हम वही चीज प्रोजेक्ट करते हैं. Okay. Okay, so something I really liked before I, end my session and then open it for Q&A. Yesterday I was clever, so I wanted to change the word. Today I'm wise, so I'm changing myself. Rumi. Okay, so कहीं ना कहीं अगर हम ये एफर्ट डालना छोड़ दें कि हम दुनिया को बदल देंगे, so you can see that's so much in green color. just connecting with the colors, it just a thought which just came to me कि मैं ये कर दूंगा, that's the green color. And today I'm wise, so I'm changing myself is the action color. कि मैं अपने आप को बदल दूंगा, ये action है. और मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, that's the action. Okay, so how much time do we have? We are open for question answers. So we are well in time and we've got about 20 minutes. Okay, so we want to do any, so we have question answers coming up, so we can do that. So I think a lot of people have asked questions during the session.
So I'm again requesting, anybody has any questions? Once again, can we put it in the chat box or the Q&A, whatever you are comfortable. Any questions right now in the Q&A? No, they are all answered. They're all answers. Okay. Right. So what I would suggest is let's move on. If somebody has any questions, you can please write it in the chat box. But in the meanwhile, I'll hand it over to Geeta. Geeta, for your concluding remarks and your small presentation that we were talking about. So Okay. over to you. So we can do a small visualization and then I'll give Yeah, it to sure. Geeta. Sure. Okay. Can hear the music? Is there any music which you can hear? Yes. Just raise You the, can hear my voice also? just raise the Yes. volume. You want me to increase the volume or decrease? Then we can't hear her. Yeah. That's why I decreased it a little bit. Okay. So this visualization exercise, what we are going to do is slowly close your eyes and let your hands rest loosely on your lap. जो भी आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए और अपनी आंखों को बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए। कुछ साउंड्स, कुछ आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, उस पर ध्यान ना देते हुए आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हैं। ब्रीदिंग इन एंड आउट, स्लोली ब्रीदिंग इन एंड आउट। टेंशन, जो भी स्ट्रेस, जो भी आपको लग रहा है कि ये आपकी इस टाइम आपकी बॉडी, आपकी ब्रेन को नहीं चाहिए, उसको आप धीरे धीरे जैसे ही आप ब्रीद आउट कर रहे हैं उसको बाहर निकाल रहे हैं। यू आर ब्रीदिंग इट आउट। यू आर फीलिंग द वेट ऑफ योर क्लोथ्स ऑन योर बॉडी, फीलिंग द वेट ऑफ योर बॉडी ऑन द चेयर। You are feeling a part of your surroundings. You are feeling a lot of colors coming in your life. A lot of feelings, a lot of emotions. जैसे जैसे हम इस सब फीलिंग्स को समझ रहे हैं, इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक अपने आप के बारे में एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। You can see a bright sunny day. You can see beautiful water flowing around us, rivers, grass, all the colors of the nature. And I'm just walking in the nature. जैसे जैसे हम उस नेचर में चलते जा रहे हैं, we can see birds chirping, we can see the water around us, we can see the play of air on our face, we can see the clouds. Somewhere when I start walking, I am also seeing a mountain path and I want to climb that path. जैसे जैसे मैं उस माउंटेन पे चढ़ती जा रही हूँ, वो पाथ शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। I can see the sun, I can see the grass, बहुत सारे beautiful flowers on my path. और जैसे जैसे मैं चढ़ती जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि yes, I can do it. I feel confident and happy. एक जगह पे आके मुझे बहुत मुश्किल हो रही है सांस लेने में, and I'm not able to breathe.
still I'm doing that effort. And when I reach to the top, I can see the clouds. I can see that how much focused and determined I am to reach to the top. अब जब मैं नीचे देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है सब चीजें बहुत छोटी हैं। वो चीजें जो मुझे बहुत अच्छे से मेरे साथ थी वो अब मुझसे बहुत दूर हो गई हैं। बट एक खुशी है कि मैं ऊपर आ गई हूँ। I have reached the top. बहुत थकावट है, मेरी बॉडी, मेरे हैंड्स, मेरे फीट कहीं ना कहीं बहुत टायर्ड हैं, बट एक अंदर से एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। जैसे ही मैं ब्यूटीफुल रॉक्स के पास बैठती हूँ, मुझे एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, एक बॉक्स जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है। एंड आई एम जस्ट looking at that box and trying to unwrap it. और जैसे ही मैंने खोला, मुझे वो चीज मिल गई जिसकी मुझे जरूरत थी। And that's the box what we all are looking for. Thank you. You can slowly come back to the room and open your eyes. I have stopped the sharing and I'm open for question answers. There is one question. There are a lot of comments about how soothing, calm, and peaceful it is. Thank you. But there is also a question: what are the ways to develop the things to improve relationships? Okay, that's a very broad question. And I would say जिसमें हमने बात करी collaboration, communication and commitment की, so कहीं ना कहीं ये तीन चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। सबसे पहले we want to do this, and then when we have expectations in connection to these three words, we understand that people are different. People have different, connection to colors and shapes. So their personalities are different in terms of that. So जब हम कोई भी एक चीज करना चाहते हैं, we have to understand from two perspectives. Like you saw in that picture, there were two perspectives. For some it was just leaves and face, and for some it was people kissing. So अगर हम हर चीज को different perspectives से view करने के लिए एक step करें, तो somewhere we give that space to people that it's okay to not respond in the way I want. It's okay to respond in your way and still we can have a relation. Is that so difficult कि हम चाहें कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो ऐसे ही करना है, एक्शन करना पड़ेगा हमेशा। अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो हमेशा that self-esteem, self-respect has to be important. अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो हमेशा बहुत कनेक्शन चाहिए, बहुत ज्यादा वो चाहिए, always feeling of belongingness होनी चाहिए. It's okay sometimes not to feel belong. It's okay not to have that freedom, and still we can be in a relation. So I would say अगर आप एक दूसरे का mutually space करना शुरू करें, एक दूसरे को वो aspect देना शुरू करें, somewhere the relationship becomes more smoother. I hope I could answer your question. Any more questions Yeah, coming in? somebody has raised a hand. If you can just unmute yourself and talk. Yeah, hi. Yeah. See, I would like to say this instead of writing Q&A. See, I have talking about this emotion. Okay. Yes. There are two emotions from two different places, we can say. I am assuming myself. So where I can control my emotion, another place I'm expressing my emotion perfectly. So I can say, if I want to smile, I'm smiling somewhere very laughter.
Yes. in a laughing mode. Okay, so there it is required. My feeling is I have to laugh enough, so I'm laughing. But where Yes. some other place I want to laugh, but I could not because of the situation and the environment or the atmosphere. So Yes. I'm keeping myself. I'm making that as a smile. Okay. Yes. So there, another thing is anger. Okay, so where I am controlling my anger as an emotion, and Yeah. somewhere I want to show that as, but I'm expressing that 100% without Absolutely. controlling anything. So Absolutely. I'm finding this difference, but I am able to balance this in some other place. So here I'm able to balance this one place, another place I'm unable to balance it. It may be Yeah. my workplace, it may be my home, it may be somewhere like it may, you can take that as a home and workplace. Yes. So how do we whether the controlling emotion is correct or expressing the emotion is correct? So it's a perspective, I would say. Whenever you are controlling something, you know, there comes the anger part, because you have to control. You have to because you give this, I would say, connection to your brain that, oh, here I cannot express, and then you go into a backseat. But there's a lot of anger with that, because I'm not able to express. I think your color was green when we were talking. Am I talking to the same person? Yes. Right. So for you, that aspect that it's about, I have to be in that way. You always want to do things in a certain manner. And when you are not able to do, then it's difficult for you. So maybe I would suggest that if you are joining that, like the 4-week program, and, we can understand and work together to get you into a more safer space. And, it will help you to understand yourself better. And that's very, I would say, thank you for asking this question, because it really gives a lot of perspective to other people also. Sure. Thank you. Thank you. There's another question, Sumita. How to react to angry people, or how to handle an angry person? Very simple question. You don't need to handle them. They will handle themselves. You just need to be in your story. The thing what we do is, like I said, main duniya badal dunga. So that action has to be taken only for yourself. When you see somebody angry, and if you don't want to take their anger, you can just leave it there. It's not something philosophical I'm talking, but it's something because it's his story. He has got angry. And why am I taking the blame? I always tell my daughter this, for me, myself, whenever I am, upset about something, never ever take this, that, start blaming yourself. Let's talk about it. Let's understand. If you can just come to me and ask me that, maybe I'm in that zone, I'm not ready to talk because I'm angry. My brain is not working in that way. But what you can do is just come and, hug me and talk to me and say that we will talk about it. I know you're upset, that much. And I will get that, thing in my brain that, okay, बिकॉज मैं गुस्सा अपनी वजह से होती हूँ, किसी की वजह से नहीं होती हूँ. ये हम लोगों को गलत फहमी है कि हम दूसरों की वजह से गुस्सा होते हैं. इट्स ऑलवेज अबाउट आई मी माई सेल्फ. मैं गुस्सा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, हमेशा हमें लगता ऐसा है कि हम दूसरों की वजह से हैं. इट इज नेवर अबाउट अदर पीपल, इट इज ऑलवेज अबाउट मी. सो अगर ये एक चीज आप याद रख लें, so then you don't need to handle anybody. You just need to handle yourself. There is another similar question: how to handle a negative thought person? Yes, absolutely. The same answer would actually go for that also, because जो भी thoughts हैं उस बंदे के या बंदी के, वो negative आपको लग रहा है, पर उसके लिए negative नहीं होगा. We don't know. आपको लगता है कि ये negative सोच है, but उसकी सोच, उसके, हम सब की सोच, हमारे एक बहुत connection है हमारे ब्रेन के पैटर्न से, थॉट्स, बिलीफ सिस्टम्स, हमने जो आज तक सीखा है, हमारा एक्सपीरियंस,
हमारे माँ बाप ने जो हमारे सामने एक पर्सपेक्टिव रखा, हम वही करते हैं और चाहते हैं हम क्या है कि हमारे बच्चे भी वही फॉलो करें. So we just want to carry that lineage. But somewhere somebody will break that lineage. It can be you, it can be your child, maybe it was your parent, we don't know. Okay, sorry, there is a clarification in the previous question. Actually, my question is, I'm making conversation with an angry person. Yeah. How can I tell my point of view, or how can I react? So when I think that it's a situational question. Yeah, If so that I've when that person is angry, I would say that person will be not at a place where they can, ask, or where they can, even understand. So I would say somewhere you have to wait to get your perspective to that level, because it's very important that you understand, because that person is in angry zone, he or she is like blocked. वो नहीं समझ पाएंगे जो आप कहना चाह रहे हैं. That person will not be able to understand. Okay, so I think somebody wants to know about the 4-week program. So Sure. There's a query Any more questions? about the 4-week program. Let me know about the 4-week program. I didn't notice. So we will also send it in your email, but I can briefly talk about it now. Any other question for Sumita, or shall we? I'll just talk about the 4-week program. If there is another question for Sumita, please post it. Please put it in the chat or Q&A. She will attend to it. So as you know, Healthy Mind Online is a digital partner of your company and the company you work for. And so there are a few programs that are available for you for free because your company has partnered with us. So this is, it is a online platform. This is what our landing page looks like. It's a responsive site. So it's similar on the phone as well. You can go to this site from your computer or your phone, both are fine. And we have counselors, okay, every month we engage with your company by sending you this EDM. As you can see, there are 4 boxes in the EDM. The top box is about resources. Every month we send you fresh resources, new resources to read and increase your awareness on the topic for that month. So for example, this one was about sleep. And so we have topics which you can hear. So there'll be a podcast and approximate time. Then topics that you can watch as a video, or topics that you can read about, and approximately कितना time लगेगा आपको उस resource को use करने में, वो भी दिया रहता है. In addition, we also conduct a webinar like today's webinar. Like today's webinar, we conduct a webinar. So this EDM is from the month of June. We had a webinar on Sleep and You, and it was again at 4 p.m. and it was 90 minutes, similar presentation by one of our specialists and a Q&A session to follow. We also have the quiz, our assessment segment. So there's a link to the resilience quiz, and below that, the wellness program. So you can download the app for the wellness program, whether you have an Apple phone or an Android phone. And these are the ways we connect with you every month. And the way you can use our resources is either you can read, listen, or watch, or you can take the wellness program. You can connect with any counselor on Healthy Mind Online and request for a 1-hour video session, or there is a 4-week program session, which, okay, this is a little bit about the resilience quiz. This is what the resilience quiz results look like. 2 main factors, physical health and mental well-being. That's what is measured by the resilience quiz, and there are other aspects. So the quiz has questions pertaining to physical health and mental well-being both, because they're both deeply interconnected. And it's a very easy 5-minute quiz. You can take that.
So if you join the 4-week program, 4-week program में क्या होता है? It is a text-based program. You can text your questions. You can, like you were doing in the chat today, you can text your questions to the specialist, and the specialist, this is what it looks like when you download it. If you can see the button below, the second picture says specialist, and it opens up. You can view the profile of the specialist, see who you connect with the most, किसके साथ best fit बैठ रहा है, and उनके साथ आपको 4 हफ्ते मिलते हैं, which means you start the program and the specialist is going to be with you for 4 weeks, guiding you, giving you tips, giving you reminders every single day कि भैया आपने, giving you some ways to either change your perspective or understand your perspective. And what this is a very, very easy thing to do. It's as easy as WhatsApp, but completely secure. As you can see, when you download the app, second picture में top right में messages का जो button है उसको दबाने से you come to this page. And it's as easy as that. You send a message to your specialist. The specialist responds to you. This is completely confidential. You can join this program anonymously. You can use your personal email, bluej@yahoo.com, yellowsky@google.com, जो भी आपको personal email use करना है, you will be completely anonymous. And this is a very, very powerful messaging page. The specialist can send you links. The specialist can send you videos if they want you to read something. They can send you the reading material on this messaging page. You can send the specialists even short audios, pictures of the work you've done. And of course, you can constantly talk. If the specialists can send you some assessments, links to assessments on this page. And once you complete, the assessments are stored on your app for you and your specialist. So you can refer to it. It's stored with a date and time stamp. So you can refer to it at any point of time. So the messaging page is very powerful. It's a very secure, powerful page. And what happens in the 4-week program is, it's very, very easy. Anytime you want, you can message the specialist. When they see it, they will respond to you. It is asynchronous from any place. मान लीजिए आप lunch कर रहे हैं या कार में हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं. At the time you feel the need for some explanation or support, at least you can type down your message and send it off. That itself brings a lot of relief. So, the 4-week program continues for 4 weeks. And as behavioral specialists will say, 21 दिन में तो habits change हो सकती है. 21 days is what it requires to change a habit. So for our experience is that, 4 weeks of guidance and support by a counselor definitely brings some change, some positive change. We've had very good feedback, and we've got very good, testimonials for the 4-week program. So since you wanted to know, and for everyone who is present at this webinar, the 4-week program is free of charge for you because your company has partnered with us. Just feel free to give it a try. It's going to bring a positive change in your life. Thank you. That's from me. Okay. First of all, thank you very much. It was a fantastic and a very interactive session. But my apologies. I want to introduce you to Archana Mittal, who is on behalf of Healthy Mind Online. And I missed that in the beginning. So my apologies once again. So she is also a chemical engineer by profession and an MBA, but now she is a health coach as well. And she is mentoring Healthy Mind Online for the ever since we started our company. So that was a little brief introduction about Archana Mittal. Unfortunately, she is not able to switch on her camera. There's some glitch in the
in today's program. So Archana, apologies once again, and that's about it. So I think that's it from our end. So if are we Sorry. having any further? Are we having any further questions? Or There is one question. There is one. Yes, please. So Please, please. a little bit which I forgot to say was, if you want to register for the 4-week program, you can write to support@healthymindonline.com. Right. And there is a question for Sumita. Yes. If we want to build relation and person is not allowing, then how to build? Wow. Which means there's a wall. So how to break the Yes. wall? Absolutely. So first of all, I would say somewhere you need permission from that person to build the relation for sure, because ये आप चाहते हैं, वो नहीं चाहता. So, you know, it's time for you to rethink, I would say, and understand, and then use communication. First, understand what is the person wanting, at least because that's the first step. पहले बात तो कीजिए कि वो चाहते क्या हैं. What is that is stopping them to, that is, you know, not allowing them to keep that relation with you. And then commitment and collaboration will help for sure. But first is communicate. First, understand the needs. First, you know, communicate your needs. You share your needs, your likings, dislikings, and the other person shares. And then only we can talk about it. Because it's like, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बताइए क्या है, but आप तो unmute ही नहीं हो रहे हैं, आप mute पे हैं. So it's like, you don't want it. You don't want to say anything. Why would I say? You are in that zone. And people remain in that zone for years and years sometimes. So it's challenge. All the best. Yeah. So actually, we have to just keep trying and trying to make the other person understand you, and we understand the other person, and try to break the ice whenever it is possible. But yes, Absolutely. I think I agree with you that, you know, it could be a challenge sometimes. Great. So again, I don't see any further questions. I'm just checking the Q&A box. That's also all answered. So we are all fine. Admin, please, if you can just note down the email IDs which people are giving on the chat box so that we can, you know, note them down. And great. So all noted. Thank you very much. And it has been a lovely 1.5 hour session. We are exactly on time once again. So at 5:30 Indian Standard Time, we are logging off. Thank you very much. And we'll see you again next month with a new program. Through your HR, we will definitely let you know what is the next program, when is it, and it will be approximately on a Friday at about 4:30 in Indian Standard Time. Midnight.